So रोटेशनल मोशन में अभी तक जो हम कर रहे थे ट्रांसलेशनल मोशन था, राइट? सो दिस मोशन जो है ट्रांसलेशनल भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है। यदि रोटेशनल होगा तो दो टाइप हो सकते हैं इसमें, दैट इज प्योर रोटेशन, दिस इज नॉट प्योर रोलिंग, देयर इज अनदर वर्ड व्हिच विल कम अक्रॉस, दैट इज प्योर रोलिंग। इन दोनों वर्ड को कंफ्यूज नहीं करना है। Fine, there is a word pure rolling and there is a word pure rotation, and there is another where this rotational plus translation is combined. This is called as fixed axis rotation. ये जो situation है, this is called as fixed axis rotation. And this situation is called as moving axis rotation. Like our fan is a fixed axis rotation. Wheel of a car is a moving axis. कि मतलब कार का व्हील रोटेट कर रहा है और एक एक्सिस है वो भी चल रहा है, ठीक है? सो ये फर्क है इन दोनों में। प्योर रोटेशन बस रोटेशन हो रहा है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मतलब रोटेट भी कर रहा है प्लस एक्सिस जो है वो ट्रांसलेट भी कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। समथिंग व्हिच इज स्पिनिंग आल्सो एंड इट्स एक्सिस इज मूविंग आल्सो, लाइक अर्थ, it's a moving axis rotation, it's moving around the sun and the axis, it's rotating on its axis also. Yes. Now see, first what we'll be focusing on pure rotation. पहले हम बस rotation पे focus कर रहे हैं। तो suppose we have a random shaped body और इसे हमने एक point पे fix कर दिया, this is the hinge, and about this hinge this is rotating with angular velocity omega. So if I take a small point here, let's say of mass dm, तो इसका जो ट्रैजेक्टरी होगा, the trajectory of this particle will be circle. Let's say this particle is at a distance r. Yes. So this particle will be moving with a velocity omega times r. All the particles on this disk on this object will have different speed. क्यों? क्योंकि ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन r जो है और पार्टिकल का डिस्टेंस जो है वो अलग-अलग है। So I can say here that the kinetic energy of this particle is half mv square. So I can say the kinetic energy of this particle will be very less. I'm talking about the particle. For particle dm जो मैंने consider किया, this is half dm into v, which is omega r whole square. So half r square dm omega square is the kinetic energy of this particle. So kinetic energy of the body का जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, that will be integration of dke, and this is half r square dm integration, and let's say omega square को मैं बाहर ले रहा हूँ, so the integration of this is ke, fine, और ये half r square dm के इंटीग्रेशन को मैं सॉरी half भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, so r square dm के इंटीग्रेशन को मैं I मान लेता हूँ, some term I मान लेता हूँ, this is half I square omega. So this term r square dm integration, this is I here, and this has been given a name, this has been given a name moment of inertia. Why this has been given a name? क्योंकि जब भी हम रोटेशनल मोशन, मैंने तो एक फिजिकल क्वांटिटी लिया है यहाँ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे कुछ भी हम लेंगे तो ये टर्म हर जगह अपीयर हो जाता है r square dm. Fine, everywhere it appears. Integral r square dm will appear in all the questions of rotational motion. So what scientists came up, that physicists and scientists, they gave it a name. इसका नाम moment of inertia है, r square dm. It appears everywhere in the rotational motion. So what we will do, we will calculate it beforehand so that the calculation reduces. Fine. So this kinetic energy जो हमने यहाँ पे ये half I omega square लिखा, this is called as kinetic energy of rotation. This is called as kinetic energy of rotation. This half mv square जो हमने पहले पढ़ा था, this is kinetic energy of translation. Got it? So यदि हम बात करें तो जब यदि pure rotation होगा तो there is only kinetic energy of rotation. Pure translation होगा तो there is only kinetic energy of translation. हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर होगा, बट हियर द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर.
ठीक है, जैसे हमारा फैन है, हमारे फैन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नाउ सपोज दिस फैन इज मूविंग एंड समहाउ ऊपर में आपने एक और मैकेनिज्म लगा दिया जिससे ये फैन के पास v वेलोसिटी आ जाएगा along a straight line. So it will have another component of energy which is half mv squared due to the translation motion of the fan.